कई कमेंट्स में मेरे को मिले हैं, उनके बारे में थोड़ी क्लैरिफिकेशन करना आवश्यक है। एक तो जनरल कमेंट ये था कि बहुत कॉम्पैक्ट था वो, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी उसमें, तो ऐसा सजेशन आया कि उसको थोड़ा और डिस्कस किया जाए। और वो जो एग्जांपल्स हमने दी थी क्वांटम मैकेनिक्स में, दैट object and subject, yeah, knower and the object both occur together, उसके बारे में भी काफ़ी प्रश्न थे। प्रश्न नेचुरली है, बिकॉज quantum mechanics is not something which we can understand easily. मैंने पहले ही बताया कि even Feynman said that if you think you understand quantum mechanics, then you don't understand quantum mechanics. We have to only see how things work. The main problem जो है इसमें, that comes from logic or common sense, what we call. Our common sense is based on our observations of the world. Gross. We live in a gross world. We see big things only. We don't see atoms and subatomic particles. So everything what we see, जो भी हम देखते हैं वो हमारे कॉमन सेंस पे बेस्ड है, द लॉजिक। और क्वांटम मैकेनिक्स का लॉजिक बिल्कुल अलग है, दैट तर्क जो है वो वहाँ पर वैलिड नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमको ये सब तर्क संगत नहीं लगेगी, और इसका हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आज। हम बताएंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे कोई प्रोसेस होता है। और वो समनी जी तो आज नहीं आई हैं, पर उनका वो प्रश्न था कि वो जब मैंने एग्जांपल दी थी कि व्हेन वी डोंट लुक एट मून इट इज़ नॉट देयर, पर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया लोगों को। इट इज़ ओनली वैलिड इन क्वांटम वर्ल्ड, इन माइक्रो वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हम जो मून है वहाँ नहीं देखते हैं तो मून वहाँ नहीं है, ये ग्रोस वर्ल्ड में वैलिड नहीं है। बट इन माइक्रो वर्ल्ड अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखें तो वो नहीं होगा। देयर द ऑब्जेक्ट एंड द नोअर बोथ एग्जिस्ट टुगेदर। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। जब तक हम इलेक्ट्रॉन को मेजर नहीं करेंगे हमें पता नहीं वो है या नहीं है। तो ये एक हमको क्लैरिफाई करना था कि क्वांटम वर्ल्ड के, माइक्रो वर्ल्ड के, सब एटॉमिक वर्ल्ड के नियम बिल्कुल अलग हैं, और उनको हमारे तर्क से हम नहीं समझ सकते। तो मैं कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाहूँगा। आप कर पाओगे सर? Oh God, what has come here? Something has appeared. Can you see the slides now? Yes, sir. Okay. So today our object is to revisit quantum mechanics little bit. And one point I had left about ecology in our previous talk, so I'd like to cover that. So as I said, the gross world or classical world, or the where classical physics is applicable, is objective. ऑब्जेक्टिव का मतलब है अगर एक प्रयोग आप करें, एक मैं करूं, या एक कोई और करे, एक यहाँ इंडिया में करे, एक अमेरिका में करे, एक मंगल ग्रह पे करे, तो एक ही रिजल्ट आएगा। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। दिस इज ओनली वैलिड फॉर ग्रोस objects. It is not applicable to quantum objects. Then it is deterministic. Deterministic मतलब कि सब नियत है। जैसे हम न्यूटन्स लॉ लगा दें, ग्रेविटी का एक बॉल फेंके तो वो गिरेगी, किस स्पीड से गिरेगी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक कार जा रही है, उसकी स्पीड है, वो किस स्पीड से जा रही है, 1 घंटे बाद कहाँ पहुँचेगी, 2 घंटे बाद कहाँ पहुँचेगी,
2 घंटे पहले कहाँ थी, हम एग्जैक्टली उसको बता सकते हैं. These things are not valid for the quantum world. And main problem is that cause and effect, that there is no effect without a cause, and there is no cause which has no effect. This is also true for classical physics or the gross world. And we have defined gross world as which we can see with our eyes and bigger. Now in micro world, in the quantum physics and subatomic physics, everything is chance based. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. It is probabilistic. उसकी एक probability होती है होने की, between होना और नहीं होने के बीच में भी states होती हैं. तो इसके अंदर हमने 7-8 ये जो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस किए थे. पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी, कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, एक कण है जैसे रेत के कण होते हैं, या एक तरंग है जैसे एक तालाब में तरंग उठती है, या दोनों हैं, या दोनों नहीं कुछ और हैं. तो ये पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी की बात हमने की थी. ये केवल क्वांटम फिजिक्स में ही वैलिड है. There a particle is both a wave and a particle. Actually if you take an electron, इसके जो फेमस एग्जांपल है वो दी जाती है कि अपने एक एटम लें तो उसका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है क्योंकि वहाँ प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूमते हैं. तो प्रश्न ये है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिर जाते प्रोटॉन पर? Why they are not attracted by the proton? Proton is massive, electron is very light. So naturally, if positive and negative charges are attracting each other, then electron should fall and atom should collapse. लेकिन ऐसा होता नहीं है और उसका कारण ये है कि electron does not exist as a particle, it exists as a cloud. वो एक न्यूक्लियस के समेत पूरे एटम में उसकी वेव चलती है और वो पूरे एटम में कहीं भी स्थित हो सकता है, एक्सेप्ट दैट इट इज इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल स्टेट. और ऑर्बिटल स्टेट्स आर आल्सो क्वांटाइज्ड. तो मैंने बताया आपको E=H/nu. तो एक ऑर्बिट उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस प्रकार वो पर्टिकुलर एनर्जी होती है और वो क्वांटम में होती है इन पैकेज. इट इज नॉट कंटिन्यूअस. सो वी टॉक्ड अबाउट पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी एंड देन वी टॉक्ड अबाउट इनडिस्क्राइबेबिलिटी, कि चीजें अपन उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपन लैंग्वेज में या मैथमेटिकल उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते. इट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. इसके बाद में आई ऑलरेडी मेंशन द साइमल्टेनिटी ऑफ नोअर एंड द नोन और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दे बोथ अकर टुगेदर. व्हाट आई मीन टू से इज दैट अनलेस यू ऑब्जर्व, if you are present and you observe an electron, then electron is not there. और हमने वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की थी. Then there is measurement problem, that we cannot measure all the parameters simultaneously. अगर हम उसकी पोजीशन अच्छी तरह एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो उसका मोमेंटम उसमें एरर आएगी. दैट इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और अगर हम उसका एनर्जी मेजर करेंगे तो किस वक्त वो एनर्जी थी, एनर्जी एंड टाइम दे आर conjugate parameters, so we cannot determine both of them accurately. This brings us to, of course, uncertainty principle, which gives the limits of knowledge, and one cannot know everything about a particle. And then we talked about complementarity. Complementarity is to say that particle nature and wave nature both complement each other, and it is not that one is against the other or one is opposite of the other, or
only one is right and other is wrong. But if you know both, then you know the particle better. So that is the principle of complementarity, that every information adds to the knowledge of the system. And of course, we talked about entanglement, that things are uh, connected to each other, even if they are not nearby or joined. Everything is connected. It is called action at a distance. And the point I wanted to make in the last class is that actually entanglement is defined as as follows, कि अगर दो पार्टिकल एक ही रिएक्शन में उत्पन्न होते हैं, एक हमने रिएक्शन किया, एक न्यूक्लियस लिया, एक और उसमें से दो पार्टिकल एक साथ निकले, तो वो दोनों एंटेंगल्ड रहेंगे फॉर ऑल टाइम्स. वन मे बी हियर, अनदर मे बी एट द अदर एंड ऑफ द यूनिवर्स. इफ यू डू समथिंग टू वन, the other fellow will respond. uh, Excuse me. There is uh, a statement made by Einstein that this is a spooky action at a distance, and experiments are being conducted at present by sending particles, let us say, from Europe to USA, long distance, and see if the two particles which arrive there, they are related in their properties or not. Then, of course, uncertainty principle I talked already. And then we talked about quantum tunneling, that even if there is a wall, a particle can pass through it. So there are situations जिसमें बैरियर होता है, और पार्टिकल दूसरी तरफ चला जाता है बैरियर क्रॉस करके, बिकॉज दिस इज कॉल्ड टनलिंग एक्चुअली. एंड सो ये कई चीज़ें होती हैं विच डिफाइज लॉजिक, because as I said, logic is based on our gross observation of gross matter, of houses and stones and cars and aeroplanes and all this, which don't follow all this kind of strange behavior. Now there is a field developing now. It is called sub quantum physics. क्वांटम से भी नीचे जो है, जो क्वार्क तक हम गए हैं. हमने एक लेक्चर में बात की थी कि क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल वी नो ऑफ. देन देयर मे बी सब क्वार्क्स, और इफ यू ब्रेक इट अगेन we may get smaller particles. So we don't know much about sub quantum physics. The work is going on, and there are no definite results to present here. And then, of course, those who believe in soul or Atma, that physics is entirely different. So as you go to more and more finer things, the physics may change. But this is what I wanted to convey to you. अब ये क्वांटम फिजिक्स में कोई प्रश्न है तो हम अभी ले सकते हैं, because now we are going to next step. Are there any questions here? There were only this question about the statement I made that when you don't see the moon, it is not there. That we have clarified. That is only valid for, that is not valid in the gross world. It is only valid for the quantum world. So if there are no more questions here, I will like to. सर एक क्वेश्चन है. हाँ. क्वांटम टनलिंग के बारे में. हाँ. क्वांटम टनलिंग में सर आपने बताया कि पार्टिकल कैन पास थ्रू अ बैरियर. यस. ठीक है. अब सर एक जैसे हमको एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है ना, उसको अटेन्यूएट करने के लिए हम कहते हैं कि भाई फिजिकल मीडिया, any barrier placed in front of that sound wave will not be so much useful, because low frequency sound wave
की उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो यूजुअली वो बैरियर को पार कर देता है. आई मीन एनी पोरस मीडिया और बैरियर दैट यू प्लेस इन फ्रंट ऑफ फॉर अटेन्यूएशन, तो वो इफेक्टिव नहीं रहता है. तो वहां पर कभी भी ये क्वांटम टनलिंग का फिनोमिना वहां पे कभी नहीं बताया जाता. मतलब क्या उसको उससे रिलेट किया जा सकता है कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है. No, I was referring to mainly from nucleus, these alpha particles come out, and the potential barrier is so much that normally they cannot come out of the nucleus, but they are seen to come out. That is one example. This phenomena is not quantum tunneling, what you mentioned about sound. हम्म. It is a physical thing कि वो the wavelength is longer than the barrier, so The thickness of it the can be barrier, seen. correct. What I am talking about is particles. How can particles come out of the nucleus when potential well, you probably know about this. Then we have to go into little technical details. The potential well is so deep that particles should not be able to come out, but still it is seen outside the nucleus. That is called quantum tunneling, and it happens in many other solid ओके. state problems. ओके. तो इसका कोई ये साउंड वेव प्रोपोगेशन के साथ या वाइब्रेशन, मतलब वो वहां पे कोई इसका कोरिलेशन नहीं है. That is gross, that is understood from the wave theory itself. ओके. Okay, so All right. I would like to say one point. ji, Basically, we can say the classical physics is nothing but the ensemble average of quantum physics. but that has not been mathematically formulated. One can say that because everything gross is made of very Subtle. fine particles, subtle particles. Yeah. But it has to be proved that how the properties which are probabilistic become deterministic when it becomes gross. That Correct. field is a gray area, not well understood. I think many people have tried to show that this can happen, but uh, that is not established yet. At what stage exactly quantum physics stops and classical begins? Is it a sharp point? Is a sharp boundary, or it is just a continuum? It slowly happens. We don't know really. Yes, That yes. remains as an unsolved problem. और ये अपने जैनिज्म का, if I may quote here, uh, there is a similarity because this क्रमबद्ध पर्याय, people say everything is deterministic. क्रमबद्ध पर्याय. On one hand, they talk of everything is already determined and will occur as it is destined. And then they talk about Purusharth also. So these two things look contradictory. I mean, I think this question will appear in everybody's mind that when Purusharth is there, then what is Krambad Paryay? When you make a choice, when you make an effort. And a classical example of this is given that Mahavir Swami, he was the grandson of Rishabdev. And at that time, it was predicted that he will become the 24th Tirthankar. So, all what he did in between, that Purusharth doesn't show up. So, that probabilistic phenomena are not obvious. It is deterministic at that level. I think this, I should not actually uh, confuse you more, but I just wanted to give an example because it is bothering me how it occurs. If somebody has a solution, I would like to understand that because No, how. this question, I also have same question since my childhood when I started thinking this. So this can occur. We have tried to understand this. We can discuss it separately. I don't think this is the place to discuss it because it's not clear. But there is limited. We try to resolve it with this pigeonhole problem, and I can talk to you
some other time in detail. But anyway, what I wanted to say is that this quantum phenomena defies common sense. So please don't try to apply logic and try to understand it, but this is the way things happen. Now, I just to summarize all our talk, all our previous discussion, I think the purpose of this kind of course is to bring to your notice that what are the things occurring uh, behind the phenomena what we see with our eyes. Now, these are not obvious, so I have just listed them again. But one of the basic things is symmetry, that everything in the universe is symmetrical. And based on this, I think a lot of discoveries have been made. So, symmetry is the basic fundamental natural principle. The other is simplicity. Uh, Things are not complicated. I mean, this we have discussed that the most of the fundamental formulas are very simple. Only when we want to discuss some peculiar things, you have to have very complicated system. So everything is simple, and nature is highly efficient. And this is the topic we will take up today. Efficiency. If nature wants to do anything, it doesn't waste anything. So it works in cycles. Everything is cyclic. Uh, so all the processes, whether they are biological, chemical, or physical, which occur in nature, they are the most efficient ways of doing a thing. If you want to convert matter A into B, and nature does that, then we can do it in many ways, and we can do it inefficiently, waste lot of energy, waste lot of material, but nature will pick up a method by which it is the most efficient. You can't even beat it anyway. Then we also discuss various um, uh, various things which occur in nature. Some are visible, but that is superfluous. That is a very small thing, like matter, luminous matter, what we see. Invisible is much more. So behind everything visible, there is much more which is invisible. And behind, if you go further, then there's lots of things which are unmanifested today, which we don't see but will manifest some other time. And there are a lot more things, even more than that, which are indescribable. We can't describe them in language. They are things to be experienced. जो कहते हैं उसकी अनुभूति होनी चाहिए, या वो अपने को अनुभव में आना चाहिए. ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. जो दिखता है वो थोड़ा है, जो नहीं दिखता है वो बहुत है. और मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि देयर इज this visible matter what we see is only 4%, dark matter is 25%, and there is another thing which is called dark energy, which is the 75%. So you see, as you go to more and more unknown regime, you will find more and more things. So just to quote it in Hindi, there is a drishya, adrishya, avyakta, and avyaktavya. Then, of course, all natural phenomena are coherent. Coherent means they work in steps. They don't interfere with each other. You may, of course, see some things interfering. You may see that some meteorites fall on the earth and create havoc. But those are only transit things. The nature is moving to a very coherent state. And I actually call it deep coherence, in which what happens to one happens to all other. And this we discussed in case of a cell.
a animal cell or a plant cell, you can see how many things are happening. And the same thing occurs in the solar system. We have sun, various planets, comets coming in, and asteroids, and everything is working in a harmonious way. And that is why we exist. If things were chaotic, I think we will not exist. Then there is order and coordination. Even if it is non-living, like in planets, you can say the cell is living, so all its organs are working in order, in coordination, synchronously. But even in non-living things, there is order and coordination and synchronicity and harmony and entanglement and instant connectivity. We'll talk about this a little bit. And everything is in a dynamic equilibrium, means things are changing continuously. A is going to B, B is going to C, C is going to D, D is going to A. It keeps on changing, but they are in equilibrium. Everything occurs spontaneously, without any order, without any instigation, without any force external to it. And this is very, very strange to me, that I mentioned that in a cell you have something like several thousand proteins manufactured every second, and nothing goes wrong. It keeps on working all its life without a fault. If there is a fault, then it has a self corrective faculty. It corrects itself. Supposing your DNA, RNA, and protein formation, there is some protein which is formed which doesn't have the correct sequence, then it will abandon it and it will instantly correct itself. So there is a self-corrective faculty, and this leads to oneness. And we discuss about Gaia, that whole universe is like a microorganism, I mean a macroorganism. It works as a human being works, that all its body parts work uh, in the knowledge of each other. So there is a kind of oneness, not only between the living things, but also between living and non-living things. So these are the, I'm just trying to summarize, because this is going to be the last lecture of this series, and we'll take up other parts later on. Uh, but this has been the essence, that these are the processes which control, these are the, processes which control all natural phenomena. And we must bear in mind when we disturb the nature, or we use the nature, or we do anything. Now, this ends our discussion about last lecture and the previous lectures. This is kind of a summary. Now I'll come to the cycles. We talked about temperature cycles, climatic cycles, and nature is very efficient. So everything in nature works in cycles, without wastage, most efficient, and is still evolving. So like hydrology cycles, you all know about it, I need not repeat it here, that water evaporates from the ocean, goes, forms a cloud, and cloud, it rains again, and not a drop of water is lost from the earth. So these are natural cycles. And same thing about a seed to a tree, and from tree you get seeds. So this is kind of a biological cycle. Every plant cycles, recycles, and recycles itself. Nothing is wasted. Same thing happens about atmosphere and uh, everything in biosphere. So we must also appreciate that nature is not at all wasteful. Only we humans are wasteful. We throw things away, and we don't use them fully. Uh, so I will come to this point, which is the topic of today, that about ecology. I showed you this graph,
This goes to about 800,000 years backwards. Present is here, and this is going backward here. And on this, we have plotted temperature of the earth. So you see, temperature increases and decreases, and this is the 100,000 year cycle. You know, between 500 and 600 years, 1,000 years, there is a one cycle here, one cycle here, one cycle here, 100,000 year cycle. The point I want to make is that zero, we are here today. We are about to go to a cold climate. We must expect global cooling. But instead, what we are having is global warming. You must have heard about global warming. Actually, if men were not there, this temperature will fall down from this point down, and we'll enter a glacial age. This 3 degrees or 4 degrees temperature difference on the earth makes, if it becomes -3, then we have glaciation all over. I think Himalayan glaciers are known to extend up to almost Mount Abu. I think they have found, I read somewhere, evidence that there was glaciation there sometime. So this peak of temperature we call interglacial, and we don't have this global cooling which we are normally going to explain. Stations were built, and when we started deriving energy uh, from coal, then a lot of carbon dioxide was put in the atmosphere. And then we have this methane cycle. The methane is largely produced from cattle. The cattle eat grass and produces methane. And the methane is this gas, gobar gas, what we call. I think these days there are lots of plants of gobar gas to provide energy. The other thing is this nitrous oxide, and this is because of chemicals used in agriculture, and of course some petrol and gasoline, diesel has lot of nitrogen compounds. And then we have this CFC, the chlorofluorocarbons, this fluorine which you use in your refrigerator and air conditioner and so on. When they go in the atmosphere, what they do, the sunlight comes, falls on the earth and heats the earth. But when it is emitted, the wavelength is different. This is on longer wavelength, so it cannot penetrate if there is carbon dioxide, methane, or nitrous oxide or something in the atmosphere. Now, this is a very serious thing, and I think we must pay attention to it, because you know that Venus and Earth are twin planets. Venus and Earth are approximately about the same distance from the sun, not very far, about the same size, about the same composition. But what has happened to Venus? We call it runaway greenhouse effect. There was a lot of carbon dioxide, and it is now at a temperature of 500 degrees centigrade. And we are not very far from that situation. I will not be surprised if one of these days the temperature just shoots up. And there are many models. I want to just qualitatively describe those models here for your information. Let me this killing curve. Uh, uh, this graph here we have 300, and it is going up to 500 or something like that. This is 1960, and this is plotted every 10 years. This 2020.
So in 1960, carbon dioxide in the atmosphere was 320 parts per million in the atmosphere. It has now come to 500 parts per million. And actually, Keeling was there when I was there at San Diego in 1960s, and he started this experiment. So I know it little bit in more detail. This is from Hawaii, and Mauna Loa Observatory. He set up a station in Hawaii because far away from land, in the middle of the ocean, and measured. And this is summer, winter, summer, winter. You see this zigzag curve, but slowly increasing. Now, when it goes to about 600 or so, or even before that, we might become like Venus. So this is an imminent problem, and I just wanted to bring to your notice. Earlier, it used to be thought, if you see this graph here, that when the carbon dioxide changes, the temperature of the earth follows it by some 50 or 100 years. That means if temperature of carbon dioxide increases today, the concentration increases today, the temperature effect will be seen after a few decades. But as the models have developed, we have come to the conclusion that it is not few decades, it may be just few years. It is going hand in hand. You see, this is the temperature and this is carbon dioxide. They are going hand in hand. So it won't even give us time. It is not that after 10 years, if we do something wrong today, it will affect the earth after 10, 20, or 100 years. It may just affect it instantaneously. That is one point I wanted to make. The other thing, which is even more serious, is that Earth has a capacity in everything. The ocean has a capacity to absorb heat. अपने जो atmosphere है, it has a capacity to absorb gases to some extent. There is some cycles going on. The gases are transferred from atmosphere to ocean. लेकिन क्या है कि अगर ये लिमिट जो हम क्रॉस कर देंगे, तो Earth will enter into a catastrophic phase and acquire a new state. And that is the very serious thing. It has been observed to occur, and there are many models saying that all of a sudden, and this has also happened in the past, कि पहले एक स्नो अर्थ हुआ करती थी लॉन्ग टाइम एगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स ago, billions of years ago, the earth was all covered with glaciers. So there was a snow earth, and we can again enter into a state where either it can become very hot or very cold, and the whole equation of the earth may change. So I just wanted to bring out this imminent thing, but people ask that what difference one person can make. Can one person make a difference? And I want to give you an example that yes, one person can make some difference. It may not be very large, but it can stop. The latest models which have come shows that it can stop the earth going from that catastrophic phase. आप इसको ऐसे समझिए कि हम जब पानी बॉईल करते हैं, तो जैसे 30 डिग्री से बॉईल किया और वो 100 डिग्री तक पहुंचता है, तो 99 डिग्री तक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर जब 99 डिग्री से वो exceed 99.9 हो जाता है, it starts boiling and turns into steam. The same thing is going to happen to earth. So if one person is observing, it can prevent the water from going from 99.9 to 100, or it can stop the earth from going to this catastrophic phase, which is very imminent. So it is a very serious thing, and I thought we will close our talk today by just mentioning that we are going through a very difficult phase. See, these things are already told in our agams. Our whole Jain lifestyle is based on minimum consumption of energy, minimum disturbance to the
physical world, minimum use of water, and so on. But in the West, it has taken a lot of time, and I just looked up the history. Only a few hundred years ago, they were believing in anthropocentrism. That is, we are at the center of the universe. Everything in the world exists for us. Just use it. This is meant for us. That was the philosophy which was given by Descartes and others in the West. This slightly improved one by one, and they came to what they call as sentientalism. They adopted a middle position, and then they came to a third stage, which is vitalism, that they started reverence for all types of life. It was admitted that there is other living beings. Earlier, in the very early in Descartes' theory, they mentioned that all other creatures are not even sentient. They are just mechanical devices, and they are meant for us to consume. But now, very recently, they have come to this theory of vitalism, in which they say that all life is sacred and give equal status to all lives. And now, most recently, they have developed what they call as deep ecology, that equal status not only to living but also to non-living. Don't disturb even the non-living. So Jain ecology, Jain lifestyle, or what we have our principles of the five principles we have, uh, not hurting anything, including the physical, they are all contained in this Jain thought. But it has taken 100 years or more for the Western thinking to come to close to Jain thought. So I will end up by saying that the solution to both this imminent catastrophe, which is going to occur anytime, let us not linearly extrapolate it कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है हर साल या हर 10 साल में, तो इसको 50 साल लगेंगे 5 डिग्री या 3 डिग्री बढ़ने में, तब तक का समय है हमारे पास. ऐसा नहीं है. It can occur tomorrow, it can occur anytime in this decade or this century. I don't know. I cannot, the models don't predict it, but it is very imminent, and the solution lies in vegetarianism and stopping consumerism, because non-veg food takes 100 to 1,000 times more water, energy, land, and resources compared to vegetarian food. And this way we can stop this greenhouse gas increasing and bringing us closer to catastrophe. So with this kind of thing, so I thought I'll cover this as a part of this lecture series. We come to an end, and if you have any questions, you are most welcome. जिस किसके भी क्वेश्चन है, सभी पार्टिसिपेंट को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपना हैंड रेज कर सकते हैं. सभी को पूछने का मौका मिलेगा. हाँ विशाल जी, आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सर, ये आपने अभी जो बताया ना डीप इकोलॉजी, उसके हाँ. बारे में थोड़ा ज्यादा बताएंगे? मतलब व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट व्हिच इज नाउ इमर्ज्ड, on what ground they say that living and non-living both are, I mean, should be given equal importance? You see, this concept is very alien to the Western thought. Uh, as I said, they started with the anthropocentrism, or what we can also call egocentrism, that we are, the universe. Everything here is meant for us. Now they have realized कि ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें जो नॉन लिविंग है वो भी हमको बहुत अफेक्ट करते हैं. They don't consider, then I think most of the people don't consider water as living, except Jains. I think they consider Right. water as living. Now water affects us very deeply. Earth
the rocks, erosion, and all these phenomena. So they have slow but uh, definite effect on life. So they say that don't disturb. This is what they termed as deep ecology. What I understand is that air, water, soil, etc., should also be treated in par with living beings. But they have come in 4 or 5 steps to this level. And if you Mm-hmm. disturb it, then the effects can be catastrophic. Okay. There are many experts here. So we have Dr. Subhash Jain here and Himanshu Rawal, and also we have Prabhu Thakkar and Kirti Padia and so on. I don't know. So anyway, this may be very elementary for them, but I thought this can be part of our understanding of natural phenomena. और कोई प्रश्न हो तो पूछिए. हाँ श्वेता लोढ़ा has some हाँ question. श्वेता लोढ़ा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जय जिनेंद्र सर. सर जय फर्स्ट ऑफ ऑल जिनेंद्र. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन. आपने बहुत अच्छी तरह से वननेस और इकोलॉजी दोनों चीजों को, दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जैसे हम वननेस की बात करते हैं और इसको इकोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, प्लस अगर हम कर्मवाद के लेवल पे या ओवरऑल पिक्चर ऑफ द अर्थ देखें, तो हर जगह जैसे हम बोल सकते हैं ना कि जैसे इम्बैलेंस हो रहा है तो बीमारी बढ़ रही है, तो यूनिवर्स में भी इम्बैलेंस हो रहा है, बॉडी में भी इम्बैलेंस हो रहा है. तो ये वननेस जैसे आपने बोला एक दूसरे को इफेक्ट करती है. सो व्हाट कैन बी अ गुड वे अदर देन लाइक जो करुणा हम कहते हैं कि करनी चाहिए, दया करनी चाहिए, लाइफस्टाइल करनी चाहिए, तो व्हाट वुड बी अ बेटर वे ऑफ ट्राइंग टू पुट एन इम्पैक्ट, प्रोमिनेंट इफेक्ट. आपका ये लास्ट सेंटेंस मेरे आई थिंक लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस वाज देयर. कैन यू रिपीट द लास्ट सेंटेंस? सर व्हाट आई मीन टू से इज कि सर हम ऐसा क्या मतलब लाइक अदर देन ओनली आवर लाइफस्टाइल्स भी हम बोलते हैं कि हम इम्पैक्ट करें, बट जैसे एसी है, फ्रिज है, सीएफसीज है, ऑन अ साइंटिफिक लेवल हम उसको यूज करना बंद नहीं कर पाते हैं क्योंकि विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड इसी का रिफ्लेक्शन हमें हमारी बॉडी पे भी दिखता है, यूनिवर्स में भी दिखता है. तो व्हाट कुड बी अ प्रोमिनेंट स्टेप दैट वी कैन टेक, what measures we can take, we can be a we can make a difference to this after listening and knowing all this. What can we do to make a difference? सर आपका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा. भंडारी सर. हाँ, मैं कह रहा था वो और सबको म्यूट कर दीजिए आप. लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इज कमिंग. इसमें ऐसा है कि बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं. वो आप एडॉप्ट करें तो बिकॉज वी आर 7 बिलियन पीपल ऑन द अर्थ, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट विल बी वेरी लार्ज. I have some calculations done that even if 1% of the people become vegetarian, or even 1% of the people minimize their requirement, then it has so much effect. So we are actually going in the wrong direction. We have to follow this principle of minimum use of energy, minimum use. I am not saying stop this. I mean, simple things which are suggested um, is, for example, your shoes. If you use soft shoes instead of hard shoes, it doesn't bring any discomfort to you, but you can end up killing much less insects on the road. So this is a simple solution. And one of the other solution problem I didn't discuss is about this chemicals in the water. All water all over the world is polluted. So if we simply start using color, I mean white clothes instead of colored clothes, because most of these chemicals come from orange, red, and purple and blue color, all carcinogenic molecules. So there are many simple solutions. We can discuss it in detail. But I am not saying that stop using car and don't fly and all this. This is impossible.
if we can minimize, I think the cumulative effect will be very large. And as I said, कि एक आदमी भी बहुत डिफरेंस कर सकता है, उस कैटास्ट्रॉफिक फेज में अर्थ को जाने से बचा सकता है. तो अपन इसको कभी और इसको लाइफ स्टाइल के संबंध में कभी डिस्कस कर सकते हैं और डिटेल में. Thank you so much, sir. It was really very thoughtful solutions and doable ones. Thank you so much. Okay, I'm glad that you appreciated the point. और भी कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं. सर एक पिछले क्वेश्चन नहीं है, बट एक जस्ट एक सजेशन था अपने आगे के लेक्चर्स के लिए. You have taken lot of, I mean, covered lot of subject in last 6-7 lectures about lot of different subjects. एक सर एक और एक पॉइंट था कि जहां हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, the mathematical realm of the imaginary numbers, how it relates into our physical reality. इसके ऊपर अगर कोई एक लेक्चर अगर आप रखे, हम जैसे मान लीजिए भाई एक हमारा सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन है, e raised to I is basically under root -1, right. so how it translates into our physical reality, because that completes our reality. तो Yes. वो एक मैथमेटिक्स में हम चलो वो एक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, वो अलग बात है, बट प्रैक्टिकली वो किस तरह से अप्लाई होता है, तो उसके ऊपर से थोड़ी समझ थोड़ी अगर आप दे तो दैट विल बी आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग. Okay, I will try to collect material on that, because most of the world is virtual world, and we right. talked about tachyons in one of the classes, that tachyons are virtual particles, but they can go by speed more than light. So आपको पता है ये मतलब एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए कि जो डार्क मैटर है वो वर्चुअल है अपने लिए, बिकॉज वी कैन नॉट सेंस इट, आवर सेंसेस कांट ऑब्जर्व, और अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स है कांट डिटेक्ट इट, दे डोंट इंटरेक्ट विद मैटर. पर आपके बॉडी में से मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आर गोइंग थ्रू, so that is all affecting us in what way we don't know. I think in one lifetime I was I just calculated once, about a few milligram of dark matter will go through your okay. So Okay. milligram is not small. It is right. It's billions sizable. and billions of atoms. So same way through the earth, मैंने न्यूट्रिनोज की बात की थी एक बार, कि they can penetrate through the earth, they can come from one side and go to the other side. They are generated in the sun. तो वो आके चले जाते हैं, they don't interact. So there are all these things which are not known. What effect do they make? I don't know. And cosmic rays are of course going through our body, and radioactive particles are going through our body and our mind. So ये सब it is kind of a virtual world. But your question doesn't refer to this. This just came to my mind just now. जो आप आयोटा की बात कर रहे थे, under root of -1, we'll try Yes, to have some discussion one of these days. क्योंकि सर मैं अभी एक सब्जेक्ट पे थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ, which is about मेटा मटेरियल्स. So whether it is acoustic or electromagnetic or photonic meta material, अब उसमें क्या है कि प्रॉपर्टीज उसकी एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है. डेंसिटी बिकम्स नेगेटिव डेंसिटी, बल्क मॉड्यूलस बिकम्स नेगेटिव, मतलब आप उसको कंप्रेस करें तो इट एक्चुअली एक्सपैंड्स. राइट. सो अब ये मैथमेटिकली तो चलो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं एंड वी डिजाइन द मटेरियल और सॉल्यूशन, बट देन in the context of the reality, वो किस तरह से ये कैसे बिहेव करता है, I mean, what exactly goes behind it, उसके ऊपर से थोड़ा आप समझ दे वो. I'll think about it. बड़ी विचित्र दुनिया है जो अपने को दिखती नहीं है, उसके बारे में हम right, sir, इतनी right, विचित्र है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते. मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा please आपको. sir, please. Sir,
Jai Jinendra, Shweta Lodha जय- again, sir. Can जी I just ask my query, sir? Hello. हाँ बोलिए बोलिए। सर आज का जो सेशन है मैं फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लिंक भी किसी के वाया है, तो इट इज नॉट अ क्वेरी बट अ रिक्वेस्ट कि कैन आई गेट अ नंबर लाइक सो दैट आई कैन बी कनेक्टेड यू नो कंसिस्टेंटली एंड गेन मोर ऑफ नॉलेज एंड लर्न सम मोर थिंग्स एंड गेट कनेक्टेड। तो अगर कोई नंबर या जिनसे मैं कांटेक्ट कर सकूं आप अशेषा जी ताकि को लिखिए ना। हम रेगुलर सर लेक्चर्स भी रखते हैं। हमारी जो जेएस है, जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, इसमें करीब 50 बड़े स्कॉलर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दो तीन तो यहीं प्रेजेंट हैं अभी। प्रोफेसर सुभाष जैन यूएसए में हैं, कीर्ति पडिया हैं, और ये जसवंत शाह जी ने अभी ज्वाइन किया है। और ये और करीब 50 लोग हैं हम ये यहाँ अहमदाबाद में। तो आप भी ज्वाइन कर सकती हैं। 26 और 27 तारीख को हमारे यहाँ एक डिस्कशन मीटिंग है कि हमको आगे क्या करना चाहिए जैन स्कॉलर्स को। इसके बहुत कारण हैं, वो मैं अभी नहीं उसमें जाना चाहूँगा, बट दे आर वेरी कंपेलिंग रीजंस that we are not doing much research or study of Jain doctrines. तो आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ शेषा जी को कहिए, या आपका नंबर आप मेरे को भेजिए तो मैं आपको हमारी मेलिंग लिस्ट में डाल दूंगा। हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं वीकली, और वेरियस टाइप ऑफ डिस्कशंस आर टेकिंग प्लेस। सर समय मैं सार का कोर्स चलता है। महेंद्र मुनि भेजा जी। है, मैं उस नंबर पे कनेक्ट करती हूँ सर। थैंक यू सो मच। सर मैंने चैट में बता दिया है उनको, मेरी मेल आईडी भी बताइए सबको, जी सबके लिए मेरा हाँ। कांटेक्ट नंबर भी दिया है, तो डेफिनेटली मैं उनसे कांटेक्ट में रहूंगी। हाँ एक तो सोचन जी। जैन जैन तत्व ज्ञान के बारे में महेंद्र मुनि जी से हमने चर्चा की थी, करीब 50 क्वेश्चन थे। उसकी भी एक सीरीज अवेलेबल है अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और एक समय सार का कोर्स चल रहा है, एक हमारे पन्नावना सूत्र का कोर्स चल रहा है, एक ये कोर्स चल रहा था जिसको आज हम थोड़ा विराम देंगे कुछ समय के लिए। और मेरे को रिएक्शन चाहिए वेदर इट इज रियली यूजफुल टू कंटिन्यू, देन इफ यू कैन राइट डाउन वेदर इट इज यूजफुल और इट शुड बी इम्प्रूव्ड और एनी सजेशन, देन वी कैन प्लान दैट वे, बिकॉज वी आर ओपन टू ऑल सजेशंस। पर जब तक आपके वो कमेंट्स या सजेशन नहीं मिलते हैं तो हमें पता नहीं है कितना एक्सरसाइज ये यूजफुल है। तो हमने एक प्रोसीडिंग्स भी निकालते हैं हम जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स की। 2-3 विवादास्पद विषय हैं, जैसे लोका का विषय है। अब जैन लोक और जो यूनिवर्स है उसमें बहुत विसंगतियां हैं। जैन धर्म विकासवाद, जो डार्विन का विकासवाद है उसमें नहीं आस्था रखता है। तो ऐसी कई विसंगतियां हैं, उनके बारे में भी हम विचार करते हैं। और जो जैन मेनली तो जो जैन डॉक्ट्रिन्स हैं, करीब हमने 20-25 ऐसी डॉक्ट्रिन्स लिस्ट की है जो हमारे आगम में बहुत क्लियरली लिखी हुई है, पर उसका श्रेय सब पश्चिमी वैज्ञानिकों को जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी 300-400 साल में वो डिस्कवर की हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। और 2 नोबेल प्राइज आपको पता होंगे, जो नोबेल प्राइज तो इज द हाईएस्ट प्राइज इन फिजिक्स एंड साइंस। इन 2 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन for 2016 and 17 have been given on Jain concepts. One is on fasting and other is on Chavyar, which mostly Jains follow. So इससे थोड़ा हमको भी कुछ बढ़ के काम करना चाहिए, और अगर समाज इसमें भाग ले तो हमारे पास 50 स्कॉलर्स हैं, वो सब काम करने को तत्पर है, पर सुविधाएं नहीं है अभी, और कुछ थोड़ा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यू आर मोस्ट गाइडेंस और वेलकम। लीडरशिप भी थोड़ी और क्लैरिटी के साथ मिले तो और अच्छा हो जाए सर। जैसे आप कभी आज गाइड कर रहे तो हम लोग भी हैं थोड़ा, जो अपने थोड़ी बहुत
इसमें काम करके अपना मतलब लाइक ना एक दिशा हमको भी मिल जाती है सर। सिर्फ गाइडेंस और दिशा बताने के लिए भी बहुत सर आपकी मतलब लाइक ये हो जाएगा कि अगर आप बता सकेंगे तो। हाँ, तो आप ज्वाइन फिर हम करिए ना, मोस्ट वेलकम, यू कैन यस कांटेक्ट मी यस एनी सर, टाइम। जरूर सर आप जरूर, वेरी कहाँ पर हैं आप? सर मुलुंड में हूँ, मुंबई में हूँ सर। बम्बई में है तो एंड हाँ, तो ठीक है, तो कोई बहुत इजी है। थैंक यू सो मच सर, वेरी हाँ, इंस्पायरिंग सर टू कनेक्ट विद यू। आप हमसे ज्वाइन करिए, हमें बड़ी खुशी होगी और हम साथ साथ काम करेंगे। और शेषा जी भी हमसे अभी कुछ साल भर पहले ही जुड़ी हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। हम आपको ये जो 50 जो मैंने बताया स्कॉलर्स हैं, ये सब आपको आपके जो भी कार्य करना चाहती हैं उसमें सहयोग करेंगे। इसमें कई फिजिक्स वाले हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई साइकेट्रिस्ट हैं और तरह तरह के एक्सपर्ट हैं, ऑलमोस्ट ऑफ ऑल टाइप्स। तो आप वो सब एक ही ऑब्जेक्टिव से हम काम कर रहे हैं, तो अवश्य आप मेरे को कांटेक्ट करिए, विल डू समथिंग अबाउट आवर फ्यूचर प्लान्स। और 26 27 को जुड़िए आप, इफ इट इज कन्वीनियंट। सर मैं उनको अपने ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, फिर जूम लिंक अपने भेज देती है इनको, तो सबको जैसे जूम लिंक, हाँ जूम, तो जूम से वो जुड़ सकेगी। तो श्वेता जी आप 26 और 27 दोनों फुल डे रहेगा। आप जितना भी आवार से जुड़ सकते हैं, मैक्सिमम एफर्ट लगा ट्राई करना। हाँ मैं हाँ आपका मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दिया है, आप मुझे यस मैंने आपका नंबर लिया है, मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ हाँ पर्सनल। आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा। विशाल जी आप कुछ ये सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि नहीं, ये तो आपके बहुत एक्सलेंट सीरीज है, ये बहुत सुपर है सर। एवरी टाइम मैंने जैसे कहा आज आप एंड करने वाले थे, अभी मेरे पास और 3 क्वेश्चन है। तो इनफैक्ट आई वाज अबाउट टू आस्क यू, आई मीन नॉट क्वेश्चन बट देन पॉइंट फॉर सब्सिक्वेंट लेक्चर। एक तो सर जैसे मैंने कहा √-1, दूसरा है सर सर इफ यू कैन एक्सप्लेन लिटिल मोर अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी, द chaos थियरी। हम एक साधारण एग्जांपल हमेशा देते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट का, कि एक विश्व के एक जगह पे कोई बटरफ्लाई खाली फ्लैप करे तो दूसरे जगह सुनामी आ जाता है। बट टुडे इन द वर्ल्ड we live wherein there are a lot of violences which is happening, so lot of subtle vibrations are also emitting out। तो उसके कारण तो कितने सारे नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते ही होंगे। तो आई एम श्योर किसी ने भले वो वायलेंस से जोड़ करके इसका कोई मॉडल नहीं बनाया होगा, बट देन people must have considered lot of other subtle vibrations and their effect on the environmental imbalance। so complexity में कहीं ना कहीं कुछ डिटेल इसके ऊपर सर कुछ अगर जानकारी दे तो वो एक थोड़ा मुझे टॉपिक आई वांटेड टू लर्न। और सर बाकी 2 टॉपिक है वो मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं। इफ यू कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट what you can say transforms, the Laplace transform and Fourier transform, not in a mathematical sense but then again in the sense of reality, कि कैसे जिस तरह से वाइब्रेशन एड अप होकर के it goes on, मतलब something which is not typically explained in the mathematics classroom। तो ये 1-2 सब्जेक्ट्स थोड़े थे which I wanted to propose, if you can think of। सर भंडारी सर आपका माइक अनम्यूट है। आपके सजेशंस हमने नोट किए हैं, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। अब आप जुड़ गए हैं तो वी कैन वर्क टुगेदर ऑन दीज थिंग्स। श्योर सर, श्योर, प्लीज कंटिन्यू दिस। यस विशाल जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आपने बटरफ्लाई का बताया है, कोई एक कुछ करता है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सुनामी जैसे बटरफ्लाई से सुनामी वाली बात जो सर ने पहले बताई थी, अभी भंडारी सर थोड़ा बहुत कुछ फड़फड़ाना शुरू कर रहे हैं, तो VIF ला रहे हैं, और वो VIF लाने के बाद हमें बहुत सारी मतलब हाँ शायद आपसे बात हुई होगी सर की कि व्हाट इज VIF। हाँ तो वी आर होपिंग कि उसके वजह से जो आज उन्होंने जो बताया कि कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट वो सब जो बता रहे थे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। करेक्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इन दिस कनेक्शन।
यस कीर्ति सर। there is a आपका वीडियो ऑन करिए ना सर। हाँ ठीक है। So there was a fire in jungle. So all elements and animals thought where we will live if this continues like that. So everybody got busy bringing water and dousing the fire. Elephant अपनी ट्रंक में भर के करता है. There was a sparrow. वो अपनी बीक में पानी लेके जाके थ्रो करती थी. Then somebody told what you will contribute in dousing the fire. Then her reply was, doesn't matter when future history will be written, no, my name will be there in the people who were contributing in dousing, not the causing the fire. So this is what I mean. Every individual can contribute to retain the nature or try to understand what has been benefited to us, what has been given to us. If we cannot improve, at least we try to see that we do not contaminate it. That itself is a great, I mean, a There are contribution. many solutions, Yeah. but you know, we don't execute them. I don't understand why. My problem is that they're simple things. We are not asking people to become uncomfortable, stop eating, or you know, things which are very hard. But even simple things can bring a lot of change. So And I would yeah, I say agree. that Bhandaraji's this 6-7 lectures, if one minutely thinks, there are a lot of examples and reasons given that how we should live. Because basically it is trying to explain how nature works. So that itself, if we understand, then what will happen? At least we will not do any step which spoils the nature. That itself is a great contribution. Okay, sir. Very nice. Chaliye, Ashesha ji, I think we can close it if there are no more questions. Definitely, sir. Thank you so much. અણુ પરમાણુ શિવ બની જાઓ, આખા વિશ્વનું મંગલ થાઓ, સર્વે જીવો મોક્ષે જાઓ, અહમ મૈયા અમૃતકો. જય જયેન્દ્ર to all. Thank you very Jai much, Jayendra. Bhandari sir and all the participants. May So we'll participants not have lecture now on next Monday, but we'll announce after this our meeting is over. बहुत जल्द हम दूसरे सीरीज लेके आएंगे और स्कॉलर से बात हो रही है और हमारा बायोलॉजी का जो इसके बाद का जो प्लानिंग था जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो हमारे ये सीरीज कंटिन्यू करने वाले थे तो हमें सिखाने वाले थे सही में कह सकते तो वो अभी फिलहाल नादुरुस्त तबियत की वजह से हमसे नहीं छूट पा रहे हैं. सो हम और स्कॉलर्स के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे. और किसी को भी कुछ पूछना है या कांटेक्ट में रहना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. जय जिनेंद्र. थैंक यू ऑल.